let me see. Just stream upcoming. Hey, I'm live. Mhm. But I don't think my mic is working right now. So, hi everyone. I am back after a long time on my channel and I've forgotten everything. I've forgotten how to set up the live stream. I remember during my first year in college I used to do a lot of live stream. Not a lot, a little bit, but I have forgotten now how to do live stream. So, in this video, we will be learning how to set up your. I mean, why am I back? Right? I am back because I was trying OBS after a long time. मेरे को लगा कि एक बार मेरे को OBS चला के देखना चाहिए and मैंने उसे थोड़ा बहुत setup किया. Then I added this name as well over here very randomly, and then I was just playing around with my old YouTube channel. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है since I made content on YouTube, and so I was like, let's explore how things work. I can relearn a lot of stuff. I can explore a lot of stuff, and I mean, I have a good machine now. I have a good camera. I remember the old days when the camera quality and live streaming quality was very gibberish. बहुत ज़्यादा भी live stream नहीं किया है, but I have streamed good enough to, I mean, a little bit. I used to mostly record stuff on screen recording using OBS, and very hardly I streamed stuff online. So why not explore it again? So let me do one thing. In this video, I will just be learning stuff, and at the same time, even you can learn stuff. First of all, we will go step by step. I will be showing you how am I setting up my OBS for live streaming, and I will be setting up things along with you, right? So let's explore how to show screen. So let me see. Okay, so I will go on with what all I know. Okay, there's a macOS screen capture option, and I can select the window that I want to capture, and I can select my window, or I can display. Cool, I think it is visible now. Yeah, it is visible. Okay, let me do one thing. Let me take this software here on my another PC, and we close my applications. I don't want some random stuff online. What, how can I show? Okay, this is what is being streamed. How do I switch? Okay, if I oh, all right. So you can't see my screen now, but you can see me now. You can see my name. I can click on an I button, उससे नाम चला आता है. Then, very nice, my mouse battery also died. Then I have a display screen. If I if I choose this, oh, I can resize myself. Just a second. I can resize by clicking on this. So now you can see my screen very well. Very nice.
If I drag my camera on the top, you can see me, the smaller me, and you can see the entire screen as well. Amazing. Hmm, what else? So you guys, um, so we can see that. Ah, very nice. So we can see that we have eye icons over here, and I can also set my audio. But right now it is not capturing my headphones audio, it is capturing the laptop's audio, right? So मुझे उसको भी फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं उसको फिक्स करता हूँ ऑडियो इनपुट कैप्चर में जाके, एंड यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ अपना माइक्रोफोन. ओके, सो नाउ आई थिंक द क्वालिटी माइट हैव इम्प्रूव्ड, और अब ये मेरा ऑडियो कैप्चर करेगा. So from what I know is these are different sources of inputs which go into my OBS. First of all, OBS is an encoder software जिससे it helps us to live stream over YouTube. And I'm using this because this is an open source software, so I'm using this software. And when I click on, when I open this, so I have different sources of input which can go into the live stream. First of all is the audio input जो मेरा अभी connected है. Let me test as well. Hello. Yes, it is correct. Then my other input is the camera input, which is this one, which is my laptop's webcam जो यहाँ दिख रहा है. I can't change my camera, right? I can. So what I can do is I can click on this, and मैं यहाँ से अपना लैपटॉप का कैमरा सोर्स चेंज कर सकता हूँ, and I can also change my resolution so that I know which is the correct resolution जिसमें कैमरा इनपुट जाएगा. Then I have this screen. How I selected this is that I clicked on plus and I have a lot of stuff. I can add an image. Okay, I can as a capture card. I think as far as I know, this is used for capturing videos from PlayStation and all, so that अगर हम PlayStation पे games खेल रहे हैं and if I want to stream it, so I can connect it through capture card and import that capture card footage from here. Then I have color. Okay. Oh, wow. So I can select a color now. I don't think you are able to see this. I selected pink color and I can enable disable this. Very nice. You can see that I have an option to select color like this, and I can change color and I can enable it and disable it. I don't know what is the purpose for this. Maybe to hide a few things, maybe not. Maybe a random rectangle. Can I crop this also? Can I crop this? You know, by the way, I had also forgotten how to edit videos. That is so embarrassing, but I know but you know how I had started editing videos. This is, first of all, this live stream is a very, very chill live stream. I'm just recording random stuff for myself. My YouTube subscribers are also just over 1,000. So I don't think anybody would be even watching me. But and I like that. I don't want people to join in. It's fine. Let it be a chill stream for myself right now. Oh, it says to watching over 1,000. I hope it's just me and and me only. So my subscribers are around 1.14K. Um, I'm again not sure how to see the exact number, maybe from the YouTube studio.
but this is the number of subscribers I have. I know you are not able to see this. So what I will do is I will add another source. I will add screen capture, and this time this will be monitor. I have another monitor, so I can choose that monitor, and you can see my monitor screen now. Yep. So this is the amount of subscribers I have now. This is a long time, bro. I've been streaming after a long time. If we go over my older YouTube videos, तो यहाँ पे I had done this. Oh, this is my first ever video on YouTube. So I have not really deleted any of the video. Let me do one thing. I should keep myself at the top. Camera. Yeah, yeah. Now we can talk, right? So what happened here is that this video you can see is my first ever video on YouTube. So this was 9 years back. Right now it's around 2026. So 9 years back, around 2017, I had done a play. मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ? So मैंने एक प्ले किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, and 7 years back, oh sorry, 9 year back, मेरी अंडर ग्रेजुएशन को ही 5 years लगे थे. सो 6, 7, 8, 9 अराउंड आई वॉज इन 10th और 9th. ठीक है. तो मैंने एक अपनी मराठी कम्युनिटी में, सो बाय द वे, इफ एनीबडी इज़ वॉचिंग एंड दे डोंट नो मी, माय नेम इज़ नमन अजय मरखेड़कर. I am Marathi by culture, and but I don't live in Maharashtra. And so we have a community over here in Delhi. So I was part of that. I still am part of that community. So I had done a play during Ganeshotsav, which is called Andher Nagari Chaupat Raja. And this is not the only play that I did there. I did a lot of plays over there. And I love theater, by the way. I mean, I used to do theater in school, in these community plays, as well as during the college. We can discuss that as well. We can talk about that. Then when I did that play, then a member of the community, senior, an uncle basically, recorded that play on his camera, and I felt like I should preserve this as a memory. And in 2017, YouTube was not really very popular. As far as I remember, at that time, Vine was very popular. That is why the name Ashish Chanchalani Vines and BBK Vines is there, because they used to make content on Vine, as far as I know. And later they shifted to this YouTube. So YouTube was merely a video sharing platform at that time, just acquired by Google, I guess. And they created this feature that we can upload our videos for free. So the point being, at that time I thought कि 2017 में I already have this video, and in order to make it public for everyone else to see, I have very limited options. At that time I had very limited options. That I could maybe create it in a pen drive and share it with everyone, or maybe share it. And the best way I found was to share it on YouTube. Let me tell you. Let's do one thing. Let me click on this, and I will show you the. Let me zoom in a bit. Okay, you can see my screen better now. So if you look at this, the starting. Look at the starting. These title and effects. You won't believe. I edited this video on my Windows 8 laptop or 8.1 laptop in Windows Media Player or Windows Movie Maker. So Windows had that Movie Maker software before.
let me try this Windows Movie Maker. That there was some software like that. Yeah, this one. Okay. So this is the Microsoft Movie Maker, not Windows Movie Maker. And this is how the software looked. भाई कितना खराब दिख रहा है. सो अगर आज के कम खुल ही नहीं सकता, राइट? इतना हाई क्वालिटी में मिलेगा ही नहीं इसका. इट लुक लाइक दिस, ठीक है? इतना खराब इट यूज टू लुक लाइक. एंड आई डोंट नो, लाइक जो लोगों ने इस पे एडिटिंग करी है, दे आर द ओजी पीपल, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इस पे कैसे कर सकते हो यार? एंड बट इफ यू कैन सी, इट ऑल्सो अलाउज यू टू रिकॉर्ड वीडियो फ्रॉम योर वेबकैम. तो माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो, स्नैपशॉट एंड एक्सेट्रा, बहुत कुछ कर सकते हो यार. मतलब यहाँ पे व्हाट वी यूज टू डू इज़, हम यहाँ पे अब अलग अलग वीडियोस फ्रेम्स ये सब रखते थे. एंड लेट मी जस्ट चेक ऑल्सो इफ माई if my streaming is working fine. Let me just check for a second. Okay, I can't check here. Just a second. Let me check if everything is working fine. Then we will go back to this editing software discussion. Yeah, it is working fine, I think. Let me check. Yeah, it is working fine. Okay, cool. So this software is Microsoft Movie Maker, और इसमें हमारे पास एक डिफरेंट वीडियोस हम यहाँ रखते थे, क्लिप्स. एंड उनको ओनली ऑप्शन वी हैड वाज टू ट्रिम इट, ऐड टाइटल्स ओवर इट, और प्री इफेक्ट्स मिलते थे, एंड वो ही होता था ऑप्शन. आई एम प्रिटी श्योर कि पहले इससे बेटर सॉफ्टवेयर्स हुआ करते रहेंगे. एंड ये जो लेयर वाली चीज़ अब मैं देख रहा हूँ, आई एम प्रिटी श्योर तब भी होगा, बट मुझे उस टाइम लेयर्स का मतलब भी नहीं पता था. आई डेंट नो हाउ टू क्रिएट लेयर्स. ओ या, आई रिमेंबर, दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. आई डोंट नो क्यों मेरे विंडोज़ 8 में भी ऐसा दिखता था, इनके में तो बहुत अच्छा दिख रहा है. बट ये लेयर अब मुझे समझ आता है कि हाउ डू यू ओवरले लेयर्स वन ओवर द टॉप ऑफ अदर लेयर, and how it will look like finally. But at that time it was very difficult. But this is how we could edit videos over Windows Movie Maker. Then what happened? So this video is basically like that. You can see these effects. These were the ready-made effects from available as presets there. The quality of the video. Okay, so I still don't know that how to export the video in a very good quality, not in recent softwares but in Microsoft Movie Maker. इसका ऑटोमेटिक क्वालिटी 240p ही है. आई थिंक मे बी बिकॉज कैमरा क्वालिटी जिससे रिकॉर्ड हुआ था, दैट वाज नॉट वेरी ग्रेट. and but the good part is I had added these, but you can see, right? अगर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ वैसे, तो टेक्स्ट कैसे इतना ख़राब क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो सकता है? आई डोंट नो, मे बी डिफ़ॉल्ट क्वालिटी 240p पे सेट थी, या फिर मैंने शायद स्पेस कम करने के लिए 240p किया. ये भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं अपलोड कर रहा था तो उस टाइम पे यूट्यूब में भी इतना साइज़ अपलोड करने नहीं देता था कि मैं 1.52 GB की वीडियोस अपलोड कर सकूं. तो मुझे कंप्रेस करनी पड़ी, और कंप्रेस करने के लिए ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू रिड्यूस क्वालिटी. मतलब यार नहीं पता होता है, ठीक है? हैंड ब्रेक जैसे सॉफ्टवेयर्स आई गॉट टू नो लेटर ऑन कि कंप्रेस उससे कर सकते हैं, एंड तब नहीं आइडिया था. सो दिस वाज द प्ले आई हैड एडिटेड, बहुत गंदी क्वालिटी में, बट आई डिड दिस. इट वाज अ 33-minute प्ले. नाउ इमेजिन एट दैट टाइम कितनी हाई साइज़ का ये वीडियो बना होगा. एनीवेज, then we come back to our older videos, the era of YouTube videos. Haha, this was also edited on Windows Movie Maker. Okay, this was a bit better because I have music also. Okay. So I was thinking कि मैं अगर अपने
स्मार्ट वॉच, उस टाइम पे मैंने जो स्मार्ट वॉच खरीदी थी उसको ऐसे टेबल पे रख दूंगा, इवन दो टेबल भी बहुत गंदा है, बट आई डेंट केयर अबाउट द टेबल, बट आई केयर्ड कि अगर मैं स्टाइलस यूज़ करूंगा, सो दिस the legendary piece of machine that is in front of you is called Canvas Doodle 28240 from Microsoft. I still remember the model name. It was one of a kind of its smartphone at that time. It came with Android Jelly Bean, Android J, और इसके साथ एक डूडल करने के लिए स्टाइलस आता था. इट वॉज अ ग्रेट डिवाइस यार, इट वॉज अ ग्रेट डिवाइस आज के टाइम पे. एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस अंटिल द पॉइंट कि इसका सपोर्ट बंद हो गया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप्ड गिविंग सपोर्ट टू दिस. और मस्त आता था यार इसका. मतलब कितना कॉस्ट था, आई थिंक 13,000 था उस टाइम पे, एंड इट वॉज अ वेरी गुड डिवाइस. Look at that. Look at that. The old icons. MI Doodle. This was from Microsoft, Micromax. Not MI is M Doodle, but exclamation. Okay. Then a few softwares उस टाइम पे जो काफ़ी फेमस है. लुक एट दैट UI यार, कितना पुराना लग रहा है, बट दिस वाज द फेमस UI एट द टाइम. देन लेट्स मूव ऑन. सो दीज वीडियोज़ जो मैंने उस टाइम पे बनाए थे, these were during the time when I used to watch a lot of tech star Shahrukh and other such channels. Who used to make content. I used to watch Naman Chhabra. Is he still? उसको देखते हैं यार, उसको देखते हैं. क्या वो अभी भी कंटेंट बनाता है? ओ, वो अभी भी कंटेंट बनाता है. क्रेजी. थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए यार, उस टाइम अराउंड 300 के कुछ सब्सक्राइबर्स थे. सो आई रिमेंबर आई यूज़ टू वॉच हिम अ लॉट. तो ये वाला वीडियो कहाँ गया? ये वाला जो वीडियो है ये, हाँ, जे कपूर. आई यूज्ड टू वॉच जे कपूर. दिस वाज अ वीडियो जो मैंने नमन छाबरा को देख के बनाया था. एंड देन जे कपूर ऑल्सो देयर. सो इफ आई रिमेंबर, so yeah, Jay Kapoor was also there. True. And then I had recently learned how to record screen using OBS. So look at this. This is the Windows 8.1 I guess, because 8 में तो स्टार्ट मेन्यू ऐसे नहीं था शायद, पूरी स्क्रीन पे खुल जाता था. इसमें तो अलग से है. सो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिखाया कैसे OBS से वीडियो बनाते हैं. इसको म्यूट कर देते हैं. And this is how OBS looked. Yeah, exactly. See, so this is how I knew how OBS works, and this is how it has become now. How will you able to see? अगर मैंने मॉनिटर को बंद कर दिया, हाँ, या एंड कलर को भी हटा दिया. कलर तो डिलीट ही कर देते हैं यार, रिमूव कर देते हैं. कलर का क्या करना है? लुक एट दिस यार, लुक एट दिस. कितना इजी हो गया है अब इसको यूज़ करना. मतलब आई थिंक look at this, and then look at this also यार. अब अब इसको यूज़ करना इतना इजी हो गया है, बट एक पॉइंट पे इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. लुक एट दी टू. अब नया वाला है, ये नया वाला है, तो नए वाले में इफ़ यू कैन सी प्रॉपर बोल्ड एंड सब कुछ है. ऑल दो पुराने वाले में भी सब कुछ सामने ही है, बट उस टाइम पे भी इजी था यार वैसे तो. बट ये देखो ना, कितना ऐसे मेरे को सामने सामने दिख जाता था. अब मुझे कुछ ऐड करने के लिए यहाँ ऐड करना पड़ता है. पहले मुझे यहाँ सोर्सेज, तो मैं ऐसे जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया, सो मैं यहाँ देख रहा था, मैं कह रहा ये क्या सॉफ्टवेयर आ गया. ओके, दिस इज़ 32 वर्जन, दिस इज़ 17 वर्जन. सो चेंजेस तो आते हैं यार. एनीवेज इसको हम हटाते हैं अपनी स्क्रीन को, एंड हम वापस लाते हैं अपनी कैमरा को. कहाँ है मेरा कैमरा? कैमरा. या मैं वापस आ गया. ओके, सो कहाँ थे हम? सो यहाँ पे दीज वीडियोज़, अमेजिंग वीडियोज़. लुक एट दिस. नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना. मैं 10 साल हो गए यार, 9 साल पहले, 10 साल पहले यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया था. ऑल दीज वीडियोज़ आर फ्रॉम द एरा जब जे कपूर यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता था. जे कपूर वॉज इंडियाज़ यंगेस्ट यूट्यूबर टू क्रॉस 100K सब्सक्राइबर्स. अमेजिंग ब्रो. एंड देन नमन छाबरा वॉज देयर.
मैं इसलिए भी देखता था, मतलब नमन नमन मैच कर जाता ना, लेम बट ओके फाइन. सो फिर मैंने ये लुक एट दिस, आई क्रिएटेड दिस video with a lot of effort at that time. I created this video twice in two languages. At that time YouTube पे ऐसा ऑप्शन नहीं था कि I could add audio और I think caption कर सकता था, I don't remember, but उस टाइम मैंने सेम वीडियो पे मैंने ऑडियो डाला था ऊपर से. I was editing, and I also gave a background to this. And you know how I gave this? So I had my own laptop जिस पे मैंने ब्राउज़र पे ये ग्रेडियंट खोल के उसको बैकग्राउंड पे रखा. आई हैड अ कैमरा, आई हैड द निकॉन कूलपिक्स कैमरा, एंड मैंने उसको ट्राईपॉड पे रखा. मेरे पास एक फोट्रॉन का ट्राईपॉड था जो मैंने धनंजय टेक की वीडियो से देख के सीखा था. मैंने उसको आगे रखा एंड मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंटेंट, जिसमें मैंने फोकस रखा है अपनी फ्रंट वाली स्क्रीन के ऊपर. उसमें ऑप्शन रहता है फोकस सेट करने का. एंड मैंने फ़ोन ऐसे रखा है एंड बैकग्राउंड में मेरा डिजिटल बैकग्राउंड चल रहा है. Awesome, yaar. Awesome. And this video was edited from, I think, Wondershare Filmora, as far as I remember. Okay, so let's track down the editing timeline. The first, let me track down the editing timeline. I will talk about this. This needs to be. So the first is Microsoft Movie Maker. Amazing. I mean, बेकार software, but but a piece, my starting free software, right? Then I moved to a lot of other software. तो उसमें से mention जाता है पावर डायरेक्टर. सो ये ना, ये उस पे था यार, ये फ़ोन पे था. कुछ काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर था. आई एम टेलिंग यू, इट्स स्टिल वुड बी वन ऑफ द बेस्ट. बट अभी तो यार बहुत बेटर सॉफ्टवेयर आ गए. बट उसने पावर डायरेक्टर, यस, मोवावी पावर डायरेक्टर, यही था पावर डायरेक्टर, आई थिंक. साइबर लिंक, यही था शायद. यस, ऐसे ही कुछ दिखता था. हाँ, ये पावर डायरेक्टर. इसके बाद आया द वन विच ब्रॉट रिवॉल्यूशन टू द यूट्यूब स्पेस ऑफ इंडिया, विच इज़ कॉल्ड किनेमास्टर. आई डोंट नो, कुछ लोग इसको काइन मास्टर बोलते हैं, कुछ लोग किनेमास्टर बोलते हैं. Let me show you for the people who are unaware of it, like the new generation. Oh my god, wait. Did Filmora buy KineMaster? No way. No way. They can't. This is the KineMaster, original KineMaster. This was their, oh, they have brought shots and all, whatnot. Okay, so this is exactly how it looked like at that time. They haven't changed the layout at all. एंड अभी जो हमें दिख रहा है ना, इसमें इतने फीचर्स थे, अभी भी होंगे पक्का से. बट उस टाइम पे इतने फीचर्स थे जितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स पे करके लेते थे. दिस वाज आल्सो पेड बाय द वे. थोड़ा जुगाड़ करके फ्री में डाउनलोड हो जाता था. इसके दो वर्जन थे, फ्री एंड पेड. इसमें क्रोमा की का ऑप्शन मिलता था. जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे क्रोमा की वॉज वेरी डिफ़िकल्ट यार. मतलब नहीं होता था सारे सॉफ्टवेयर में. वो विंडो माइक्रोसॉफ्ट मूवी मेकर में नहीं होता था, इसमें होता था. मैजिक रिमूवर, आई डोंट थिंक ये था. क्रोमा की था, वीडियो स्पीड करने का ऑप्शन था. एआई तो नहीं था ऑब्वियसली. कलर फिल्टर वगैरह ये सब मिलता था उसके अंदर. 4K एक्सपोर्टिंग सपोर्ट करता था यार. दैट इज़ वाई शुरू की, इफ़ यू लुक एट एनी ओल्ड वीडियो, जब हमारे पास टेक्निकल ज्ञान और आई मीन टेक्निकल गुरु जी, एंड देन देर वर शर्मा जी ऑल्सो. आई डोंट नो वेयर शर्मा जी इज़ राइट नाउ. शर्मा जी टेक्निकल, उस टाइम पे बीफ चलती थी. सो टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल में काम करते थे, एंड देन ही लेफ्ट शर्मा जी टेक्निकल, एंड देन यूट्यूब पे अलग टाइप की बीफ चल रही है. ओ माय गॉड, आई एम ओल्ड. सो अलग ये वाली बीफ चलती थी. 4K एक्सपोर्टिंग सपोर्ट करता था. तो उस टाइम पे ये थे, तीन चार लोग थे जो यूट्यूब पे टेक्निकल वीडियोस बनाते थे. अब तो आई थिंक काफ़ी फेमस हो गए होंगे अगर वो अभी तक बना रहे तो. बट या, oh, I'm getting a call. Just a second. Let me pause. Let me see. Hello.
एक मिनट आओ। ओके सो मेरा डिलीवरी आया है राइट सो I need to pause my stream. So this is a new struggle. How can I can't pause my stream, okay? So what I will do is I will just add another layer of I will just write how we write back. And जब तक मैं ना आऊँ तब तक बोर ना हो इसलिए I have learned one more thing is we will listen to music from Suno. So Suno is amazing AI music video. So we will listen to this. I will come in 2 minutes. I had a line that didn't land, kinda crooked, kinda dumb. It hummed inside my head all day, so I let it hum. I tried to clean it till it shined, scrubbed the edges, lost the bruise. Every time I made it clear, it just lost you. So I left the words wrong, let the vowels fall flat, kept the stumble in the sentence, didn't polish that. It isn't what I'm saying, it's the way it drags along, how your chest starts vibrating when I leave the words wrong. You said that line don't make much sense. Yeah, I know that's kinda it. Truth comes out in half-made shapes, more than perfect scripts. I could trade this tiny shiver for a clever little twist, but I'd rather keep the moment than the meaning you might miss. So I left the words wrong, let the rhythm trip, kept the gravel in the tone and the quiver in my lip. It isn't what I'm saying, it's the way it hangs too long, how your heart hears the silence and I leave the words wrong. What if reason is just noise? What if grammar kills the voice? What if every broken phrase? How do I come back? Let the letters blur, kept the crack inside the chorus where the feeling stirs. It isn't what I'm saying. Very nice. I'm back. So let me talk about the other stuff. Where were we? So we were in the KineMaster category. Then what came was the wonderful piece of software Wondershare, Filmora. Should I do one thing? Should I play the music in the background so that the live stream looks better? I think I should. Let me do one thing. Oh, camera was off. So let me do one thing. I should play this and volume low. Right? इससे hello. I think this is good, right? इससे मेरा voice disturb नहीं होगा. फिर भी I will just check once if my voice is correct.
Yes, it is fine. So, where were we? We were at. मैं थोड़ा और रिड्यूस करता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं इसको अप कर देता हूँ. Good. So, भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया. So अपन आएंगे. So then came the amazing piece of software Wondershare Filmora. जब came the era on YouTube where we had this video. Um, the guy who used to go to Karol Bagh, DSLR like video from phone about cinema FLV. This was the app जिससे हम वीडियोस बना सकते थे. एंड so there was this guy, I don't know if it's no, I can't find it, but this application Cinema FLV was the application. Cinema FLV app phone for phone. ये FV5, sorry, FV5. So इसको यूज़ करके FV5 okay 5 DSLR video from phone. Snapseed था. Snapseed उस बंदे ने कुछ तो बनाया था यार, ऐसे Snapseed यूज़ किया था, ये किया था, एंड इनसे वो वीडियोस बनाता था. सो दिस वाज एन एरा जहाँ पे सिनेमा FV5 बहुत यूज़ होता था बाय एंड्रॉयड फ़ोन्स, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसा था इंटरफेस जिसमें हमें ऑप्शन मिलता था इसको वो करने का. इसमें हाई क्वालिटी एकदम रॉ लेके आने की, बिकॉज हमारा जो फ़ोन होता है उसके अंदर अगर हम उसका डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है. अब तो मिलती है, प्रो मोड मिलता है, बट उस टाइम पर नहीं होता था. लेकिन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रो मोड होता था, तो लोग इसलिए यूज़ करते थे, एंड मैं भी करता था. आई डोंट नो, उतना फिल्मी नहीं बना पाया, अभी तक तो नहीं बनाया अभी तक, बट उस टाइम पे मैं करता था. ठीक है, तो वंडरशेयर फिल्मोरा उस अभी भी चलता है काफ़ी ज़्यादा, बट उस टाइम पे क्या क्या इससे कंटेंट बनाया है मैंने. इफ़ आई गो टू माय चैनल एंड इफ़ आई शो यू माय वीडियोस, सो मैंने काफ़ी सारा कंटेंट वंडरशेयर फिल्मोरा पे ही एडिट किया है, बिकॉज इस पर इतना ईजी होता था एडिट करना यार. मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मुझे बने बनाए मिल जाते थे, मैं उसे बस यूज़ करता था और एडिट बनाता था. सो ये वाला जो कंटेंट है ये मैंने फिल्मोरा पे बनाया है. फिर then came the era when I started my first hands at some content like this. So इसमें मैं क्या करता था, क्रोम पे जाके थीम लगा रहा हूँ. ओ बाय द वे, दिस वाज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिससे ये इंट्रो बनाया था. आई विल शो दिस इंट्रो. No. उस टाइम पे बहुत कूल था क्योंकि हर कोई इसको यूज़ कर रहा था यार. एंड मैंने पहली बार देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट थीम्स जाना सिखाया था. देन डार्क मोड यूट्यूब पे उस टाइम नहीं था डार्क मोड, ये बाद में आया था. सो उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था टू शो द डार्क मोड. ऐड कैसे हटाते हैं, वेरी नाइस, ये सब वीडियोस बनाता था. हाउ टू डाउनलोड अ यूट्यूब वीडियो, आज तक लोगों को नहीं आता है यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करना, बाय द वे लेट मी टेल यू. एंड सो उस टाइम ये मैंने SS वाला ट्रिक बताया हुआ. सो ट्रिक है ये, मतलब व्हेन यू, इट्स नॉट अ ट्रिक एग्जैक्टली, इट्स अ डिफरेंट वेबसाइट जिस पे ये अगर मैं दूंगा तो ये एक वेबसाइट खुलेगा, उस पर एक ये इसको यूज़ करेंगे लिंक को एंड वीडियो डाउनलोड कर देंगे. ओह माय गॉड, व्हाट दिस प्रोफाइल पिक्चर इज़ कूल लग रहा था उस टाइम में, एटलीस्ट मुझे खुद को. कोई नहीं. सो मैं आगे चलता हूँ. ये वाला वीडियो, सो नो वे नॉट दिस, look at this video, such a cool thumbnail I had built at that time, bro. Amazing, like this is a very, So hello guys, this oh my god, आवाज़ बंद करते हैं. So ये क्या, ये वीडियो
ये मैंने पूरा काइन मास्टर में किया, यू कैन सी द एडिट, इट लुक्स लाइक काइन मास्टर एडिट बिकॉज ये जो फॉन्ट्स है ना कुछ कुछ के सेम ही रहते हैं। एंड देन मैंने वीडियो डाउनलोड करके उसे एक लाइव वॉलपेपर लगाया बस। लेकिन उस टाइम पे हर चीज़ का हैक होता था यार, हर चीज़ इजी नहीं थी करना। ये वो दौर है जब मैंने रिजरेक्शन रिमिक्स रोम इंस्टॉल किया था अपने MI के फ़ोन पे। इट वाज रेडमी नोट 4G। उस पर मैंने रिजरेक्शन रिमिक्स किया था, पिक्सल रोम किया था, एक सियानोजन मॉड रोम इंस्टॉल किया था। सो ये सब करता था मैं। समझ कुछ नहीं आता था, यूट्यूब पे देख देख के वी यूज्ड टू डू, एंड इट वाज फन, राइट? इट वाज फन। The people who are here from the old times, the times of YouTube, the OG times would agree with me that कस्टम रोम्स इंस्टॉल करना कितना फ़न था। अब तो यार XDA डेवलपर्स की वेबसाइट होती थी, उस पर सारी चीज़ें दिखती थी। लेट मी गो ऑल्सो यार, यू नो वॉट हैपन आफ्टर दैट। उसके बाद जो ये जो रोम्स है जैसे MIUI रोम एंड सैमसंग की जो रोम है OneUI, all these ROMs started becoming very stable, but उस टाइम पे they were not stable. So उससे better ROMs मिलती थी। पिक्सल रोम के अंदर हमें पूरा, इफ़ यू रिमेंबर MI A1 करके एक फ़ोन आया था which was a Android based phone, stock Android phone by partnership between Google and MI. So MI का hardware phone, and it was a beauty. It was a beauty at that time. I'm telling you, beauty. So it was a beauty at that time because उसके अंदर हमें सब मिलता था यार। मतलब हार्डवेयर MI का इतना अच्छा होता था एटलीस्ट, एंड उसमें हमें रोम मिलती थी, उसकी OS मिलता था सीधा स्टॉक एंड्रॉयड, एंड ऑन गूगल उसके अंदर हमें गूगल फ़ोटोज़ में अनलिमिटेड स्टोरेज देता था। बाय द वे आजकल कहाँ मिलता है अनलिमिटेड स्टोरेज, सब पैसे वाला खेल हो गया है। अब मिलता भी है कि नहीं मिलता है इवन दैट आई डोंट नो, बट उस टाइम पे तो मिलता था। अमेजिंग। Then came another era. Okay, then I stopped doing YouTube. Look at this video, right? This is a review which was my the best of at that time video. I had done this hard work बोलूँगा, मतलब काम effort डाला of putting a proper background. You look at this production, bro. It was 8 years before. I was in 10th standard. Look at this production quality. Can you even guess how I was doing this? Maybe you can guess now, but at that time it was very creative. पता है मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, but this is my channel. I will do what I like. Lol. So मैंने इस फ़ोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, एंड मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले किया, एंड आई जस्ट केप्ट माई फ़ोन देयर, एंड आई डिड अ बी रोल बोल सकता हूँ। सो ऐसा मोशन किया सो दैट कैमरा एकदम ऐसा टिल्ट होके आए मस्त इस पे एंड रुक जाए, एंड उसके बाद मैंने उस पर जूम किया दूसरा फ्रेम, एंड इट वाज ऑटोमेटिकली जस्ट swiping and doing stuff on the screen, right? This was a creative, that was, I'm telling you, right? I was very creative. अभी भी हूँ, but उस टाइप कुछ ज़्यादा था। Yes. So great review, phone review. बहुत घटिया फ़ोन था, by the way this was. एक साल के अंदर it got overheat and it stopped working. But yes. Then came the era when my board exam started and I stopped doing YouTube. I think now that I think of it, if I had continued it, I might have done a lot. I mean, I would have continued making videos at that time if I had. तो मैं बनाते ही रहता, and I don't know what could be my outcome ऑफ इट, बिकॉज उस टाइम पे मैंने जो 1000 सब्सक्राइबर्स थे मैंने उसी टाइम पे गेन किए थे। यही कंटेंट से, ये जो कंटेंट देख रहे हो ना, इसी से मैं 0 से 1000 आया। 1000 आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट उस टाइम पे इफ़ यू सी बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब नहीं देखते थे, राइट? बहुत कम लोग। 2015-16 में तो जियो आया था यार, 3 साल ही हुए थे। सो इतना नहीं फेमस था यूट्यूब, एंड बहुत कम लोग थे। ये वो ज़माना है जब यूट्यूब रिवाइंड बनाया करता था, जब फ़ैन फेस्ट हुआ करता था। अब तो फ़ैन फेस्ट भी कहाँ होता है, बट उस टाइम पे अच्छे से हुआ करता था ऑफलाइन।
क्या दौर था यार. बट एनीवेज 2010 2020 वाज अमेजिंग टाइम फॉर यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब जो ग्रो हुआ है उस टाइम इंडिया में, वो कम्युनिटी थी उसकी, ओरिजिनल कम्युनिटी. जब फैन फेस्ट होता था ना, तो उससे पहले छोटे छोटे मल्टीपल्स शहरों में एक छोटी छोटी मीटअप्स होते थे. एंड यू वोंट बिलीव आज के टाइम पे क्या होता है. 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 100 के सब्सक्राइबर्स. बट उस टाइम पे 100 के सब्सक्राइबर्स गिनती के लोग थे, पता है. एंड जिनके थे ना, उनको बुलाया जाता था. मुंबई के निखिल वाज कॉल्ड ऑन स्टेज ड्यूरिंग द फैन फेस्ट, in front of whole audience, when he had just 300k subscribers. And just imagine आज के टाइम पे किसी के 5 मिलियन भी हो जाए, आपको नाम भी नहीं पता होता उस यूट्यूबर का. इतने चैनल्स हो गए. बट उस टाइम पे 300k वॉज ऑल्सो वेरी बिग डील. एक एक बंदा जानता था. एंड जितने यूट्यूब थोड़ा भी लोग एक्टिव रहते थे, बहुत लिमिटेड क्रिएटर्स थे और बहुत अच्छे क्रिएटर्स थे. एंड ऑल वर डूइंग अमेजिंग इन देयर फील्ड्स. I was also one of them. Then I stopped doing it. 3 years passed by. I gave JEE. Almost got admission into a college. Actually, I had gotten admission to BITS, and then I bought my first laptop. And my dad bought it for me. But and then because my mom asked me कि कहाँ गया तेरा यूट्यूब चैनल. Imagine after 3 years I was reminded of my YouTube channel. I got reminded of my YouTube channel because I stopped making content altogether. I was like नहीं यार, it's enough. I did because boards आ रहे थे, and then उसके बाद 11th गया, 12th गया, and just stopped for long. I kept getting comments. I still get comments till date. And that is what actually takes me back to YouTube again and again कि like थोड़ा तो content बना रहता हूँ, कभी तो content बना रहता हूँ. It's like that. Consistency अब बहुत मुश्किल हो गई है. But at that time it was effortless यार, because I was just making content for myself, and I don't even think कि उस time I ever felt I overthought about it. I never ever. I have been touched wood very lucky that everything I've done so far, people have always supported me यार. So people used to watch my content in school. They used to come to me and say, भाई ये वाला वीडियो देखा, बहुत अच्छा था. And I was like, damn, I killed it once again. I was the one of the only few people who were making content at that time, in my school at least. So again, because मैं अकेला था, so people knew me, right? Because of this. Then came college. I made a bit of simple stuff for college. Then I was like, let's make a good content. Then I made this video. I really liked this video. After I made this, I got introduced to so many people because of this video. Because this video was published, a few people shared it on college groups, and I will just say good things, okay? And actually good things happen. I got introduced to a lot of new people in college. मेरे को पता चला उनके बारे में. Online में it's very difficult, right, to make friends, but I still made friends from being online, from making content. Used to see my own videos online, bro, as Google Meet पे आके. Then I made a series of content. I made a series of Know These Firsties because I was so inspired by my college mates. So when I entered a college, right, when you enter a college, the first, it's very common, which can happen with a lot of us, कि हम लोग थोड़ा फोमो में आ जाते हैं. हमें सबसे पहले ये लगता है यार, what am I even doing? सब लोग फोड़ू है यहाँ पे. जब मैं कॉलेज में गया, सो टिल दैट टाइम, बिफोर दैट, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, at least class. And once I stepped into college, I was average, below average or mid average guy, because all the people are so smart. Like people आर बोल रहा हूँ बिकॉज उस टाइम पे भी थे, अभी भी होते हैं. जब तुम एक ऐसे पूल में जाते हो वेयर ऑल द पीपल आर फ्रॉम द सेम, लाइक सब टॉपर्स है ना, अपने स्कूल के सब टॉपर्स थे. सो
हर कोई टॉपर था. So I was so inspired by that. Look at this Rakshit, amazing guy. um, he used to teach people, ठीक है. And then Anushil, I still talk to him a lot. Anushil like used to write poems, and I was like, damn bro, इन्होंने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें करी है साथ में, and not just पढ़ाई. Look at him, Vitesh, he was also a teacher at that time. Then Ayush, he used to make music online. I don't know if he still does. I hope he does. And he used to make music on Spotify. Then Rishabh, amazing guy. He also used to make content on YouTube. I don't see his videos anymore. Um, but I hope he restarts if he has stopped. Then I stopped, right? I switched my content a bit. I switched my content to a bit of helping nature. I started making kind of videos which helps people. I started making content for juniors so that they can learn. They can get guidance. So what used to happen is, जो मेरे को doubts आते थे ना from the juniors, I used to make content about it. And look at that worked, right? I got 7K views from this. I will tell you what is the very basic video. This video, 102K views, 102K views, and I still keep getting views. I will show you the analytics of this video. This is a very simple video. How to watch lectures in 5x. People knew 1x, 1.5x, 2x, how to watch in 5x. Now there is an option. In 2026 we have an option, but till last year I think we didn't have option to speed up. And I just showed that we can do it using a Chrome extension. That's it. And look at the growth this video has. This video has a linear growth. Until now it has saturated because now YouTube has this option by default. But till this date, which date is it? April 10 last year, I guess. We had a linear constant. We just had a linear growth, right? अब तो सैचुरेट हो गया, बट अब क्योंकि कोई सबको पता है अब ऑप्शन है यूट्यूब में यहीं पे बिल्ड, यहाँ से अब people can, right, till 4x they can. So at that time it was very difficult. And right, one observation I'm going to tell you, this is a very generic observation though, is majority of the people in, I won't say India, basically I haven't explored the world, so majority of the people who are who are an average viewers, very very average viewers I'm talking about, where not जो इनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा रैंडम चीज़ें ही पता है, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है. दे डोंट नो बेसिक स्टफ जो हमें बेसिक लगता है. लाइक हमें बेसिक क्या लगता है, ओके इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड ही तो करना है. बट आस्क योर पेरेंट्स, मे बी इफ योर पेरेंट्स आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे विल फाइंड इट वेरी 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 हार्ड कि यार कहाँ से करना है, कौन सा ऐड आ जाता है, फिर उसको स्किप भी करना है. बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है डाउनलोड कुछ भी चीज़ करने के लिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में, एंड इतना अलग टाइप से डिफ़िकल्ट हो गया है. सो as basic as searching for a Chrome extension, downloading it is difficult for a set of people. So by the way, जितना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, I'm doing it so that I can talk online. I can bring myself online. I just present myself raw, right? Because it's been a long time I've been online. YouTube पे तो it's been long I've made content, and live stream is the easiest way to make content. So I'm doing it because why not? And I'm liking it. Cool. Then what happened? Then I made a few edited videos, some vlogs. I think these were a bit of a good quality vlogs, though I got very less views in them. Then I came back to this Bitsy and Talk series with one of my closest friends, Gunank Agarwal. He's doing amazing things right now. And then I made a video about my theatre group,
very random videos. Very rarely I used to make content. Then came the best snaps, which is the last part of your college life when mostly farewell. You can count it as farewell. And then I stopped. And then came the time when I started 6 months ago. I was like, let's make a film again. It's been long. I have the resources now. I can edit a high quality video, even though this might or might not feel high quality, but I have used a lot of frame. I will do a separate live stream in analyzing the frames of this video, my own video now, so that I can learn from myself, and I can share it as well if people are not aware of these things, right? So इसके अंदर how I have created this video and इसमें कौन कौन सा frame use किया है मैंने, कहाँ कहाँ किए है, like for example I will tell you, you will find a lot of symmetry in this video. Look at this. This is a एक angle पे I have clicked this and you will find कि एक इस line के about बहुत सारी symmetry है बहुत सारे frames में. For example, look at this frame. We have this line as a symmetrical line जो इसको दो parts में divide करता है, ठीक है? Let me increase the quality. Okay, ये high quality है. Then here थोड़ा सा off है, but if you watch this content ना, then you will find कि there is a reason I have kept it like this, but this is also kind of symmetrical. This is a kind of so what this symmetrical or what this division actually does is it separates the, I mean बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ कि it separates कि what एक contrast दिखाता है. Like if you look at this ना, there's a यहाँ पे गंदे कपड़े रखे हैं and यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, right? So एक shot अच्छा बन जाता है. Then this was also kind of middle frame, although symmetry नहीं है. ये चीज़ यार पहले से थी मेरे अपार्टमेंट में. Then this was a frame where I have kept like a line of which divides the two frame into two, and then this shot where again, oh, why is it high speed? Lama. It looks so funny. So ये देखो मैं चल रहा हूँ and then there's a center line, right? ऐसा shot है ऐसा. नेक्स्ट फ्रेम यहाँ पे भी एक ऐसा शॉट है एकदम सेंटर. सो मैं इसको प्रॉपरली एनालाइज करूँगा यार. लुक एट दिस. माय अमेजिंग फेवरेट फ्रेम फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है? I will analyze the edit, right? But I can if I start talking now, I can't stop talking. Look at this. When you edit videos, you have to keep the videos ऐसा कि एक व्यूअर को ऐसा दिखता ही चला जाए. मतलब व्यूअर ऐसा कभी थोड़ा सा भी उसे वो हर्डल ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा फील नहीं हो, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि मैं क्या देख रहा हूँ यार, नहीं ऐसा नहीं. सो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें ना, ऐसा कट्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, बट हम सिर्फ कट की बात कर रहे हैं अभी. तो अगर जैसे उसने एक शॉट देखा तो दूसरा शॉट वहीं से चलना शुरू हो जाना चाहिए. सो अगर मैं सेंटर में हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी सेंटर में है, ठीक है? लुक एट दिस. मैं सेंटर में है ऑब्जेक्ट, एंड जो नेक्स्ट फ्रेम में मेरे को आना चाहिए ना, आइडियली मेरे को इसी हाइट इसी रेशो में आना चाहिए. बट हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने शायद वो ध्यान नहीं दिया था, बट मैंने ये ज़रूर ध्यान दिया था कि मैं सेंटर पे आऊँ. ऑल्दो लुक एट माई लेग्स, राइट? इट विल बी लेफ्ट, राइट एंड देन लेफ्ट. सो व्हेन आई एम लिफ्टिंग माई लेफ्ट लेग और उससे मैं आगे रख रहा हूँ, तो नेक्स्ट शॉट में लेफ्ट लेग ही मेरा कंटिन्यू होना चाहिए. लुक एट दिस. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट. सो ये चीज़ इंसान को बहुत स्मूथ बना देती है. लाइक ओह ओह ओह. सो वो कट फील ही नहीं होता, ऑल्दो यहाँ हुआ रहेगा. बट लुक एट दिस. यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, और भी चीज़ें दिखाता हूँ. देखो, एक दो राइट लेफ्ट. तो यहाँ पे भी मेरा राइट ही लेग आ गया था when I'm moving forward, right? So there are a lot of things which can happen here. This shot I kept because इसके अंदर I was feeling, so इस context में I was saying कि I'm not doing anything else, right? And here it feels like I'm being trapped. I'm trapped in a certain situation. ऐसा context है इस वीडियो का, at least इस एरिया में ऐसा लग रहा है.
इस स्टोरी में कि आई एम ट्रैप्ड एंड आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, आई मीन आई बीन एक्सप्लोरिंग स्टफ एंड लुक एट दिस ना. सो हेयर एक मुझसे गलती है कि इसमें ना हाईलाइट करना चाहिए व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन. सो यहाँ पे ना एक चिड़िया है जो अब चहचहा रही है एंड वो सेंटर में है. अब सेंटर में मेरे को ही नहीं दिख रही है. चिड़िया है या स्क्विरल है कुछ तो था. एंड उस वो ना ऐसा, ये देखो ये है यहाँ ये शॉट. तो इसमें इट लुक लाइक वो एक बैरियर में है. लाइक यहाँ पे एक आगे फिल्टर है उसका, जेल जेल बोलना बोलना चाहिए, फ्रेम ऐसा कुछ है, फिल्टर है, ठीक है. उसके थ्रू ही मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो मैं जब ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को एक्सप्लोर करने का, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर थिंग्स विच आई कैन डू. आई एम ऑल्सो रिलेटिंग एंड दिस इज एनोलॉजी विद दैट वर्ड एज वेल, बिकॉज वो जो बर्ड है वो भी मैं उस तक मैं बर्ड फ्री है, मैं नहीं हूँ, ठीक है. इट्स लाइक दैट. इफ यू कैन कीप काउंटेड एज अपोजिट ऑल्सो, कि बर्ड जेल में है बट यहाँ पे इट्स लाइक मैं जेल में हूँ और मैं बर्ड को देख रहा हूँ जो फ्री है, राइट. तो वो फ्री है, वो दुनिया में कहीं भी जा सकती है. सो मैं उसको देख रहा हूँ और ऑब्जर्व करके ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. देयर इज़ अ लॉट टू एनालाइज. मैंने ये वाले वीडियो इतना भी सोच के, मतलब काफ़ी सोच के बनाया था यार वैसे तो. Then this was a video, very raw video of me doing paragliding. Why I created this video? Because यहाँ पे when I did ना, I wanted to preserve the my uh, my emotions in a most beautiful way I could. And I personally feel कि the most raw I keep the video, the best the emotions come out as. कि मतलब उतना ही अच्छा दिखता है इमोशंस अगर मैं वीडियो को सबसे ज़्यादा रॉ रखता हूँ. इवन दो यूट्यूब पे मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि people don't watch this video, but these video that I had created, this video and this actually this video as well, ये मैंने एक ऑडियंस के लिए बनाई ही नहीं, राइट. ये मैंने खुद के लिए बनाई है. ये मैंने खुद के लिए बनाई है. मैंने ट्राई किया है कि यार इसमें मैं अपना सब कुछ दिखाऊँ, अपने लिए बनाऊँ. ये तो यार छोड़ ही दो. तो it's a sponsored segment anyways. So ऐसा ही है. So this was the analysis of my YouTube channel. What else should we talk about? Let me look at my live stream now. Is anybody still there? Is anybody there? There's a one like. Thank you, bro, whoever liked this video. So there are two people. One is my sister and one is Sora Kadam. Is it Rohit Kadam? Hi, bro. Hi, Sora Kadam. I don't know who Sora Kadam is, but Kadam is one of my friend from college, Rohit Kadam. Okay. If he is Rohit, then hi, Rohit. Yeah, I'm analyzing my own content now. Glad, yeah. That is my chill stream. That was my chill stream. It's been, I think, 1 hour since I've been streaming. I think I might do more streamings. मैंने ऐसे stories by Naman नाम दिया था. You know, one more thing I will tell. Why creating YouTube channel, even though I'm not active on it right now, but has always been the best decision of my life, because I was able to I was creating the content when nobody else was creating, or very less people were creating. Secondly, I can and always express myself. It's like I have a proper channel for myself where I got good amount of views at one time, once upon a time, right? But आज के time पे it's like it's not there for content, it's not there for getting reach, it's just for expressing myself. I might create another channel, maybe आज नहीं, maybe later on, where I create content for just random stuff, maybe for reach, right? So that might be a second thing. But for right now, at this point of time, this YouTube channel was and always be a way for me to explore stuff, to find out what all I can do. I can just share my information there, and I will, and I'm like, this creating this YouTube channel has helped me to express myself more and become better in speaking. It was very difficult for me to speak
not just online, basically on camera once upon a time, but I think making videos, speaking on camera always helps. It's always a plus. It makes me less conscious when I am in a meeting, when I'm presenting a topic. I don't think about, all I mean, I don't get nervous. Basically, I just don't get nervous. अभी भी if you see, I'm not speaking अच्छे से, है ना, मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ, but बात करते, but मेरा पहले से it has improved a lot, right? When I was creating content before, it has changed a lot. Yes, I have talked a lot now. There will be a time when I will talk about some college stories, then some bits Goa stories. We can talk about some engineering stuff. I can talk about my own life, what is happening right now, where am I working, what am I doing. And in these live stream is the best way to express myself. And secondly, in these just live streams, I can just do random stuff, right? There will be a time when I will be creating, I will be vibe coding, I will be using AI to do random stuff, and we can create random applications. And I might attract some coding audience from there, but that would be a very good thing. I can talk about my stories. We can play games, we can play chess, though I'm not expert, but we can do a lot of stuff, right? So guys, that thank you so much. अगर कोई अभी भी देख रहा है, which is very rare because this is very rare, rest of the rarest times when I'm doing a live stream, but अगर कोई देखा ये live stream, so thank you so much for being here. If you want to ask me any questions based on what I have done in the past, the few things that I've done in the past, then you can just send me a message on the Instagram. You can comment on the YouTube video. मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं अभी that I will miss your comment, okay? I will for sure 110% reply to your comment. अभी भी आते हैं, मैं करता भी हूँ रिप्लाई. जो 102 के सब्सक्राइबर्स गए, व्यूज़ गए हैं ना उस वीडियो पे, उसके कमेंट अभी भी आते हैं, एंड उसके अभी भी मैं रिप्लाई करता हूँ. इट्स बीन 4 years. बट so that is the point. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for listening to me. I will meet you in the next one. Till then, goodbye. Bye.